In a certain city, only two newspapers A and B are published. It is known that 25% of the city population reads A and 20% reads B newspaper, while 8% read both A and B. It is also known that 30% of those who read newspaper A but not B look into advertisements, and 40% of those who read B but not A look into advertisements, while 50% of those who read both A and B look into advertisements. What is the percentage of the population reads an advertisements? So what is the given in the question? We have to write. So there is probability of A. We have to define some event like probability of A will be 25 upon 100 because they will be in percentage. So we have to divide by 100. Then we got 1 by 4. Similarly, we have to find the probability of B. That will be 20%. So we have to divide by 100. Then we got 1 by 5. Now what is the question? The question is that we have to write while 8% reads both A and B. So probability of A intersection B, that will be 8 upon 100 is equal to 2 by 25. Now from the question we got probability of A intersection B. This is the formula, minus probability of A intersection B. Now put the values in this given formula. We know the value of PA. Probability of A will be 1 by 4 and the probability of A intersection B will be 2 by 25. Then we got $100 and above it 17. After that, according to the question, newspaper A will be not read, that will be A bar. Intersection of B, that will be probability of B minus probability of A intersection B. Now put the values. 1 by 5 minus 2 by 25. Then we got 3 upon 25. Let C be the probability that the population who reads advertisement, that will be probability of C will be 30% of probability of A intersection B bar plus 40% of probability of A not intersection B plus 50% of probability of A intersection B, because probability of C be the probability that the population who reads advertisement. Since A, there is a condition, since A intersection B, A bar intersection B and A intersection B are all mutually exclusive. Then we have to find the probability of C. Probability will be, there will be 3 by 10 multiplied by 17 by 100 plus
because there will be 30%. Then we got, after simplification, we got 3 by 10. Then the value of probability of A intersection B bar, that will be 17 upon 100. Then 40% will be 2 upon 5. Then the value of this term will be 3 by 25. Then 50% of, then 1 by 2 into 2 upon 25. After calculation this, we got 1 by 39 upon 1000, that will be 13.9%. So this is the correct answer. Hello student. So first read the question. There are 5 students S1, S2, S3, S4 and S5 in a music class, and for them there are 5 seats R1, R2, R3, R4 and R5 arranged in a row, where initially the sheet Ri is allotted to the student Si, I is equals to 1 to 5, but on the examination day the 5 students are randomly allotted 5 seats. The probability that on the examination day the student S1 gets the previously allotted seat R1 and none of the remaining students get the seat previously allotted to him or her. So what will the probability? Okay, so now see what we have given. We have given 5 seats that are S1, S2, S3, S4, S5. Okay, and we have these 5 seats R1, R2, R3, R4, R5, and we have 5 students S1, S2, S3, S4, S5. What we have said? We have said that S1 is sit at its corresponding position, because here this is given that R1 previously allotted seat R1, S1 gets the previously allotted seat. Okay, so S1 gets the previously allotted seats, what is R1. Now we have to find the probability that these 4, what will the 4 students where they will sit. Okay, so see, first we have to find the 4 cases. So for allotting 4 students, this is D arrangement case. So what will the formula? Since there are 4 students, so 4 factorial into 1 minus 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial minus 1 upon 3 factorial plus 1 upon 4 factorial. This is the formula. Now what will, when we solve this, so this will be now 4 factorial is 24. When we took LCM, so we get LCM of denominator, so we will get 24, and here we have, this will be cancelled out, so here we have 12 minus 4 plus 1. Now 24 to 24 cancel, so now we have 12 minus 4 plus 1, which is 9. Okay, now what will the probability? So the probability will be total number of favorable outcomes, that are 9, upon total number of all outcomes, that are 5 factorial, because we have 5 students, so we have 5 students, so that will be 9 by this will be cancel out, so now this will be, so this will be now 3 by 40. Okay, so our final answer is 3 by 40. Now see the options what we have. We have given 3 by 40, so first option is correct. Okay, thank you guys. Hello students, in this question we have given that 4% can hit target correctly with probability of this, and if all the hit target would be hit, then we need to find the probability. So basically probability of hit target
probability of hit target, and we know that probability of hit target plus probability of no target equal to 1. Now we need to find the probability of hit target. So basically probability of hit target is equals to 1 minus probability of no target. Now so basically this is our occurrence event A, B, C and D. So from here we can write as probability of hit target basically equal to 1 minus probability of A bar intersection B bar intersection C bar intersection D bar. So from here we can write as, we can see that this is independent event. So from here we can write as 1, this equal to 1 minus probability of A bar multiply probability of B bar multiply probability of C bar multiply probability of D bar. So from here we can write as this equal to basically 1 minus, we can write as probability of A bar basically 1 minus 1 by 2, and here multiply by probability of B bar, basically B is given as 1 by 3, so we can write as B bar is 1 minus 1 by 3 multiply probability of C bar, basically C is 1 by 4, so 1 minus 1 by 4 is probability of C bar, and D is basically equal to 1 by 8. So from here we can write as probability of D bar is basically 1 minus 1 by 8. So from here we can write as this equal to 1 minus, here we can write as 1 by 2 multiply, here we can write as 2 by 3 multiply 3 by 4 multiply 7 by 8. So from here we can write as this equal to 1 minus 7 by 32. From here this equal to 32 minus 7 divided by 32. So from here we can write as 25 by 32. So from option, and we can say that option number 3 is correct. Thank you. देखिए ये आपका क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी टू नॉन नल इवेंट। ए और क्या है, नॉन नल इवेंट, मतलब जीरो एलिमेंट, जीरो सेट नहीं है, ठीक, कुछ ना कुछ एलिमेंट तो है। सच इज अ सबसेट ऑफ बी, ए क्या है, बी का सबसेट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट, चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। सबसे पहले हमें क्या बोल रखा है, हमें रखा है कि ए क्या है, बी का सबसेट है, ए क्या है, बी का सबसेट है, जिसका मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ हमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी ए बाय बी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी ए बाय बी के बारे में पूछा, तो पहले तो बात करेंगे कंडीशन प्रोबेबिलिटी ए बाय बी होती क्या है आपकी, ए बाय बी किसके बराबर होती है, वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में बी। अभी हमें पता है कि अगर ए क्या है, बी का सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए के बराबर होगा, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ एक तो प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर है, और आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी वो किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी के बराबर है, ठीक है। अब बात करेंगे हम बी की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, वो या तो ज़ीरो या तो ज़ीरो से बड़ी, या तो वन से छोटी के बराबर होगी। तो यहाँ से वन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो वो क्या होगी, वो या तो वन होगी या तो नॉट डिफाइन होगी, या तो क्या होगी, वन होगी, या तो क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो क्या होगी, उसकी रेंज क्या होगी, वो होगी या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर या उससे बड़ी, या तो नॉट डिफाइन या
नॉट डिफाइन या तो उससे छोटी, नॉट डिफाइन के बराबर होगी नहीं, ठीक है, तो इक्वल्स टू का साइन तो होगा नहीं, इक्वल्स टू साइन तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो नॉट डिफाइन नहीं होती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 होती है प्रोबेबिलिटी, इसलिए नॉट डिफाइन। तो अब बात करते हैं यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ए बाय बी वो क्या होगी आपकी, वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो कि ये किसके बराबर है आपका, ये आपका है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, जो कि क्या हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो क्या होगी, वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ से आपकी कौन सी कंडीशन सही होती है, वो होती है आपकी बी, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है यहाँ से, बी, तो आपका आंसर कौन सा है, आपका आंसर है बी, तो ये हो गया आपका आंसर। हेलो, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि लेट टू फेयर 6 फेस डाइस ए एंड बी बी थ्रोन साइमल्टेनियसली, दो फेयर 6 फेस डाइस ए बी को एक साथ थ्रो किया गया है। इवन क्या है, इवेंट है दैट डाई ए शोज अप 4, ठीक है। E2 क्या है, इवेंट है कि डाई जो भी ये शो करेगा 2, और E3 इवेंट है कि जो सम ऑफ नंबर होगा ऑन बोथ साइड इज ऑड। तो बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सबसे पहले ये देखते हैं कि इवेंट इवन क्या है, कि इवेंट दैट डाई ए शो अप 4, ठीक है। तो इस क्या क्या हो सकता है, 4,1 हो सकता है, यानी कि फर्स्ट डाई पे 4 है और सेकेंड डाइस पे 1 है, फिर 4,2 4 जो कि कांस्टेंट है फर्स्ट डाइस पे, और सेकेंड डाइस पे क्या 2। सिमिलरली ये सारे मतलब कितने होंगे 6, ऐसे 6 केसेस बनेंगे। तो नंबर ऑफ इवेंट इवन क्या हो गया, 6 केसेस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन क्या हो जाएगा, जो फेवरेबल है, भाई टोटल जो सैंपल स्पेस है क्या होगा, दो डाई को थ्रो किया गया है, तो नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस होगा कितना होगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36, तो 6/36 किसके इक्वल हो गया 1/6 के। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन का वैल्यू। अब हम देखते हैं E2 क्या है। E2 क्या है कि डाई जो बी है सोर्स अप 2, तो अगेन इसका क्या क्या केस होगा कि डाई 1 पे कुछ भी आ सकता है और डाई बी पे क्या आना चाहिए, केवल 2 आना चाहिए, और डाई ए पे कुछ भी आ सकता है। तो ये सारे कितने ऑप्शन होंगे मेरे पास, कितने केसेस होंगे 6, इसमें भी 6 केसेस होंगे, ओके। तो नंबर कितना हो गया, नंबर ऑफ वे जो इवेंट E2 हो जाए 6 तरीके से। तो प्रोबेबिलिटीज का क्या होगा, इवेंट E2 का E2 बाई जो सैंपल स्पेस, E2 कितना है 6 है, टोटल कितना था मेरे पास सैंपल स्पेस 36 का स्क्वायर, यानी कि ये भी कितना है 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी क्या है 1/6। अब हम देखते हैं तीसरा क्या, इवेंट E3 क्या है कि सम ऑफ नंबर ऑन बोथ डाइस इज ऑड, सम ऑफ जो नंबर होना चाहिए ऑन बोथ डाइस इज ऑड। तो क्या क्या हो सकता है, ऑड नंबर में क्या क्या आता है, 1 आएगा, 1 दो नंबर का सम कभी नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा, तो 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा और 11 होगा। ये 5 केसेस होंगे, क्योंकि जानते हैं कि दो डाइस का मिनिमम क्या वैल्यू हो सकता है 1 + 1 2, और कहाँ तक मैक्सिमम जाएगा 6 + 6 12 तक। तो इस 6 से 12 के बीच कितना क्या आ सकता है 3 5 7 9 और 11। अब इसके देखते हैं कितने केसेस होंगे। 3 को क्या क्या हो सकता है 2 1 और 1 2, ठीक है, मतलब जितना नंबर है उससे एक केसेस कम होगा। 5 का क्या हो सकता है 4 1 3 2 2 3 और 1 4। 7 का क्या हो सकता है 6 1 5 2
4 3 3 4 2 5 एंड 1 और 6। 9 का अगेन क्या क्या केसेस हो सकता है? 6 3 5 4 4 5 और 3 6, 4 केसेस। और 11 का क्या केसेस होगा? 6 5 और 5 6। तो हम देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना है। टोटल नंबर ऑफ केसेस है E3 का 18। तो यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या हो जाएगा? 18 आउट ऑफ टोटल कितना है? 36। कितना बचा? 1/2। ये किसका प्रोबेबिलिटी है? E3 का। अब हमको देखना है E2 E3 E1 E3 में कौन इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसे किसका देखना है हमें? E2 E3 में, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? E1 E2 का देखते हैं। E1 और E2 का हम देखते हैं कि क्या है। तो हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या होना चाहिए। पहले हम E1 इंटरसेक्शन E2 निकालते हैं, क्या होगा, ठीक है। E1 इंटरसेक्शन E2 का निकालते हैं कि क्या होगा। तो दोनों में अगर हम देखें, इस दोनों में तो कॉमन क्या क्या है? कौन सा नंबर होगा जो कॉमन होगा? 4 2 4 2, ठीक है। सिर्फ ये एक ऐसा नंबर है जो क्या है? कॉमन है। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? 4 2। तो कितना तरीके से होगा? ये 1, तो ये 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 क्या है? 1/36। ओके, तो प्रोबेबिलिटी की E1 E2 क्या हो? इंडिपेंडेंट हो। इसके लिए क्या होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होना चाहिए? E1 क्रॉस E2 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसका प्रोबेबिलिटी क्या आया मेरे पास? 1/36। P1 क्या आया था? 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या आया था? 1/6 आया था। यहाँ से देख सकते हैं 1/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 का 1/6। तो ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/36 हो जाएगा। ये क्या है? दोनों इक्वल है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके, सिमिलरली हम देखते हैं E1 E2 हो गया। तो अब हम देखते हैं E1 एंड E3 का। E1 E3 में देखते हैं क्या कॉमन है। E1 में क्या है? सब में 4 है। तो 4 वाला क्या क्या केसेस है जो कॉमन होगा? E1 4 के साथ ये है, और क्या है? फर्स्ट नंबर 4 है, ये है और ये है। तीन केसेस होगा, 4 1 4 3 और 4 5, ठीक है। तो E1 इंटरसेक्शन E3 क्या है? 4 1 4 3 और 4 5, ठीक है। ये मेरा इंटरसेक्शन है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? E1 इंटरसेक्शन E3 का 3/36 विच इक्वल टू 1/12। तो हम ये बोल सकते हैं। और यहाँ पे हम देखें E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या है? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो E1 का प्रोबेबिलिटी क्या था? 1/6। और E3 का क्या प्रोबेबिलिटी है मेरा? P3 का, यहाँ पे देखें P3 का प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो ये किसके इक्वल है? 1/12। तो हम देखते हैं कि दोनों क्या इक्वल है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि E1 एंड E3 आर इंडिपेंडेंट इवेंट, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। E1 E2 हो गया E3। अब E2 E3 देखते हैं। E2 एंड E3 देखते हैं। तो यहाँ से देखें अगर E2 इंटरसेक्शन E3 तो क्या होगा? वो सारा केस जिसमें मेरा क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो लास्ट डिजिट 2 किस पे है? ये 1 2 है, 3 2 है, 5 2 है, ठीक है। तो क्या है? 1 2 है, 3 2 है और 5 2 है। यहाँ पे भी कितना केसेस है? 3 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? E2 इंटरसेक्शन E3 का 3/36 विच इज इक्वल टू 1/12। और हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या हो जाएगा? E2 का क्या प्रोबेबिलिटी है?
1/6 और E3 का 1/2 इक्वल टू 1/12। तो यहाँ से भी बोल सकते हैं कि दोनों इक्वल है, तो क्या बोल सकते हैं कि E2 एंड E3 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ठीक है, अब हम सब निकालते हैं फाइनली किसका, E1, E2 एंड E3 का। यहाँ पे देखें तो E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 क्या होगा, जानते हैं कि E1 और E2 में क्या कॉमन है, 4-2 और 4-2, लेकिन 4-2 इसमें इसी में कोई नहीं है, तो कोई ऐसा आइटम नहीं है जो ये किसके इक्वल है, ये 0, कोई भी ऐसा नील है। ठीक है, 5 बोल सकते हैं इसे नील। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 का 0 के इक्वल। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से कि इवेंट E1, E2 और E3 है आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कि E1, E2, E3 क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन गलत है, E1, E2 और एंड E3 मिसिंग है, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे E1, E2, E2 क्या है, सेम दिया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि E1, E2 एंड E3 आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, कोई भी इवेंट क्या इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये मेरा आंसर होगा। थैंक यू। Hello everyone, in this question we have let A and B be two events such that probability of complement of A union B is 1/6 and probability of A intersection B is 1/4 and probability of not A is 1/4. So then events A and B are what? And we have four options, option A, option B, option C and option D. Here we have 1, 2, 3, 4 in place of ABCD. So what we have first, we have probability of A union B and its complement is 1/6. Now I can write this as 1 minus probability of A union B and that is equals to 1/6. So the probability of A union B is what? 5/6. Now for we have given probability of A intersection B is what? 1/4 and probability of not A is what? 1/4. So here we can say that this will become 1 minus PA equals to 1/4. So the probability of A is 1 minus 1/4, that is 3/4. Now if I talk about probability of A union B is what? Probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Now we have A union B as 5/6, A as 1/4, there is 3/4, and probability of B as it is, and A intersection B as 1/4. So we have this as 5/6 equals to 2/4, that is 1/2 plus probability of B. Now if we solve this, we get the probability of B as 5/6 minus 1/2. So we will get the probability of B as 6 is my LCM. So we have 5 minus 3, that is 2/6, and finally we have 1/3. Finally we have 1/3, right? So this is the probability of B. Now what is my probability of A intersection B? That is probability of A into probability of B if A and B are independent events. If A and B are independent events. Now my A intersection B is what? 1/4. And what is my PA? The probability of A is what? Probability of A is 1/4. And we have probability of B as 1/3. So this is 3/4, not 1/4, this is 3/4. Now if I solve this, we'll get 3 will get cancelled out and we have 1/4 equals to 1/4. It means A and B are independent events, but not likely equally likely, right? So the option C is the correct option here, that they are independent but not equally likely. This is my final answer. Thank you.